I would like to welcome you all at this press conference of Fitness Expo Dubai, Pakistan Chapter 2017. We just did a successful event in Dubai. Dubai में जितने बड़े health, fitness and beauty के नाम हैं around the world, वो हम दुबई में लेके आए थे. We have to show the rest of the world that there is a market in Pakistan. पाकिस्तान में बहुत कुछ है शो करने के लिए और इंशाल्लाह हम वही शो करेंगे. माँ बाप मेरे जिंदा हैं, भाई मेरे साथ हैं, मुझे सिर्फ खुदा ही रोक सकता है, बाकी हर चीज़ हो गई. दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान क्या चीज़ है. दुनिया का सबसे बड़ा फिटनेस एक्सपो का विजन लेके मैंने दुबई में स्टार्ट किया. दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन मिडल ईस्ट का बड़ा बन गया विद इन द फर्स्ट ईयर. तो नाउ वी आर नंबर 4 इन द वर्ल्ड. और पहले साल में इट्स नॉट बैड एट ऑल, राइट. और वो भी पहली दफ़ा एक पाकिस्तान ने किया है. मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान बोलता रहूँगा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. अगर आप में रियली टैलेंट है, आप सोचते हो कि I'm better than anybody else, तो आओ और हमें दिखाओ, whether it's body building, martial arts, जो भी है. To actually thank the gym for sponsoring us, showing us support. I'd like to actually thank the whole panel sitting up with me. I love the sport. I grew up watching UFC. तो मैं इसको यहाँ पे फैलाना चाहता हूँ. तो इसलिए मैंने शुरू में बोला है कि किस में क्या दम है, किस चीज़ में आप लोग एक्सपर्ट हो, ताकि वो हम यहाँ पे कर सकें. आमिर खान अभी यहाँ पे सुपर फाइट लीग लेके आ रहा है, एंड आई एम वर्किंग विद हिम टू प्रमोट बॉडी MMA स्पोर्ट पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत टैलेंट है यार. हमने बहुत कुछ सुना है, बॉक्सिंग, MMA, ट्रैक एंड फील्ड, जो भी है. आई सपोर्ट इट 100%. What I'd like to ask is, are those companies going to be at this expo? Are they going to be looking for athletes to sponsor in Pakistan? Absolutely. Protein is our sponsor for bodybuilding. You have Jack Nutrition and others here that will be looking for sponsors, looking to sponsor athletes, and we have many other names. I mean, the list is big, and yes, you can get sponsored in Pakistan. Team GAT is looking for sponsors. Sphere 14, Tesla, SciTech, Effective, Infinite Labs, just to name a few, are looking for sponsors. So looking to sponsor some. There are many different federations and they're all doing a good job, but they're not together. So we are hoping that we can show the world that we are one rather than many. So whoever is supporting us, I'm sure they will let you know that they are supporting us. I don't know who all these federations are. I only know a few, handful of them. पहली दफ़ा शो किया था, and it was a massive show. जितना वो शो था, I don't know आप लोग कितने मिस्टर ओलंपिया को जानते हो. हमारी जो प्राइज मनी थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइज मनी थी, more than Mr. Olympia. People are overexcited. 193 countries competed in that competition. दुनिया में 204 countries हैं. So I think we did a pretty good job. Managing that crowd was not easy. बाकी अभी आप जो different federations हैं, उनकी अभी आप politics नहीं जानते हैं, थोड़ी देर में जान जाओगे तो और सच निकलेगा. We tried to manage it as best way as possible, और इसलिए यहाँ पे हम एक ही आवाज़ निकालेंगे. There won't be many different voices. So inshallah you'll see a proper show here. हमारे जो judges हैं बाहर से आएंगे, international judges. It will be fair, more than fair competition. और यहाँ भी जो judges हैं हम उनको respect देंगे. We will try to bring them on board ताकि हम उनसे सीख सकें, क्योंकि this is a new field for us. पाकिस्तान का झंडा हम ही उठाएंगे, बाहर का उठाए ना उठाए, हमने उठाया ना. मैं पाकिस्तान में आप शो करेंगे, आप क्या सपोर्ट देंगे जो बाहर से आए हों. अगर हम नहीं उठाएंगे तो बाहर की हम कंप्लेन कर नहीं सकते. आप क्या समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉडी बिल्डर है मिस्टर यूनिवर्सल के मुकाबलों तक पहुंच सकते हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखें, स्टूडेंट उतना ही कर सकता है जितना उसका टीचर अच्छा हो. उसको आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन टीचर चाहिए, राइट. तो हम यही करेंगे कि पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं,
جو ہم یہاں پہ سرچ کریں گے جو ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. میں تو یہاں پہ دینے کے لیے آیا ہوں، رائٹ. مجھے نہیں کہ اس نے کیوں نہیں دی، اس نے کیوں نہیں دی. ہم لوگ یہاں دینے کے لیے آئے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ رانگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، گالیاں دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے. اگر ہم خود تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اپنا گھر ہم سنبھالیں، پاکستان سنبھال لیں گے ہم. کیونکہ صرف یہاں پہ باڈی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ ایکسپو ہو رہا ہے. جو مینی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز، فیملی ڈے ہوگا، آپ بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں. سو مینی، بہت کچھ ہوگا تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے نا، میں پیسے کی ویلیو نہیں لگا رہا ہوں، آپ کے ٹائم کی ویلیو لگا رہا ہوں. دیٹ یور ٹائم ول بی ویل اسپینٹ. اور انٹرنیشنل برانڈز آپ کو ملیں گے، انٹرنیشنل ایتھلیٹس آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آئے گا. مسل میڈیا میگزین از ون آف آور بگیسٹ اسپانسرز کمنگ ہیئر ٹو کور دس. کیونکہ لوگ یہاں اس لیے نہیں آتے تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے، رائٹ. تو ہم دکھائیں گے کہ پاکستان سیف ہے. ہمارے لوگ کس طرح کے ہیں وہ ہم اب دکھائیں گے، رائٹ. یہ ایونٹ صرف ہیلتھ اینڈ فٹنس کی انڈسٹری نہیں کھولے گا، اوور آل ٹورزم انڈسٹری کھولے گا، رائٹ. پیپل سی اٹس منکی سی منکی ڈو. لوگ آئیں گے، رائٹ. تو Dubai Expo mein, there was over 40,000 people. Over 50 athletes, international athletes from around the world who are stars. If you follow them on social media, there's a combined social media following of, what was it, 40 million, 50 million? over 200 million. Yeah, 200 million combined social media following of the athletes that were there. So ye bhi athletes, ye Pakistan mein kabhi pair bhi nahi lagaya. And they're coming for the first time because we're putting this conference on. So it's a great opportunity for us to match the talent that we have here in Pakistan and match, the international scene and stage. We're trying to create the bridge between these two entities that can actually allow both sides to display their talent. As you said, the donors and VIPs, foreign VIPs coming in Pakistan, what do you do for their security? Very good question. Very, very good question. Number one problem jo ho rahi hai na, security ka issue hai. So we've tied up with a couple of different private and government entities to make sure that this goes well. Kuch kehna chahenge? Thank you. Okay. We good? Pakistan? Thank you. جیسے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا ہے، this is to start. Inshallah in future you will see the fashion, you will see the game, you will see the business people come to Pakistan. You open the door for the public and people from overseas all over the world, and inshallah you people will support this. کیوں پہلے کیا